Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 28th of March. The session will be quite interesting and important students, so stay tuned with us till the end. In this video students, we will be talking about India's total export. Then we will be talking about Vigyan Dhara scheme that has been recently launched to promote scientific research and innovation. Next thing we will be talking about Sansad Bhashini, that is an AI powered multilingual parliamentary ops. Next thing we will be talking about the 28th convocation and Shishoyo-Paniya Samaskara in New Delhi. There are many more new students in this video that we will be discussing till the end. Stay tuned with us. It will be very beneficial session. Apart from the students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. Monthly current affairs, weekly current affairs and topic wise are uploaded regularly to help you prepare better for the competitive exams. Apart from this students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one stop solution for current affairs, and also share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. India's total export increased by 6.24% to 750.53 billion during April to Feb of FY25 as per the data released by Ministry of Commerce and Industry. So what is the increase? This is 6.24% increase and it has reached 750.53 billion dollar. See, increase in export is quite important for us, as we know that $1 is now approximately 87 rupees, right? So this increase in value of rupees or the decrease in the value, basically, right, it has increased, right? That $1 is now giving us more rupees. So it is beneficial if we are exporting more. That means we are bringing dollars, but when we are converting the dollars, that is more amount of rupees it is being converted. Similarly, but if we are importing more, right, that means it is negative. That means we have to give more rupees to convert it into dollar and buy the products, and we know that India is an import dependent country, correct? So take a note of this, right? So the export increased by 6.24%. If we talk about the imports also increased by 7.28%, right? That means more import has been done, and it is $839.89 billion of import was done by India during April to Feb of FY25, correct? Take a note of this. Here you can see the import and here it is the export data. Apart from this, India's total export, we saw both merchandise and service is estimated at $71.95 billion, registering a growth of 3.16%. Also, as per the data, India's trade deficit has decreased to a 3-year low of $14 billion in Feb 2025 compared to $19.51 billion during the same period a year ago. Next is Vigyan Dhara scheme. This scheme has been recently launched that will boost the India's scientific research and innovation. I repeat, this Vigyan Dhara scheme launched by Government of India. It was launched on 16th of January 2025 to strengthen the India's scientific research, innovation and technological development. This scheme will merge the 3 existing umbrella schemes of the Department of Science and Technology. Which are these 3 schemes? It is Science and Technology, Institutional and Human Capacity Building, Research and Development, and Innovation and Technology Development. The main aim here is to basically advance the research and development infrastructure, promote basic translational and collaborative research, drive innovation across schools, industries and startups, and also ensure the
gender parity in science and technology fields. Right? So take a note of this. So this is your Vigyan Dhara scheme that will be boosting the scientific research and innovation in India. Next is LS secretary. What is LS? LS is your Lok Sabha secretariat, right? So Lok Sabha secretariat, they have recently partnered or signed a memorandum of understanding with MEITY to launch Sansad Bhashini for AI powered multilingual parliamentary operations. See, this Bhashini, this is an AI powered platform, right? What it will do, it will make sure that language should not be a barrier when we are communicating in parliament, right? Multiple language support will be provided here for in Bhashini. Bhashini is Bhasha interface for India, correct? Take a note of this. So it is Lok Sabha Secretariat and MEITY, they signed this MOU to develop an AI powered solution that is named Sansad Bhashini that will provide comprehensive in-house AI solutions for multilingual support. Apart from this, MEITY and DFI. DFI is your Drone Federation of India. They have also launched NIDAR under Swayan initiative, right? This NIDAR, that is your National Innovation Challenge for drone application and research. So MEITY and DFI, they partnered together for this NIDAR, and it was under SWAN, capacity building for human resource development in unmanned aerial system. See, this SWAN initiative, if we talk about this, it was launched in July 2022, and it is MEITY that has approved this initiative, which focuses on capacity building for human resource development in unmanned aerial systems. That includes your drones and related technologies. And the key target under this SWAN initiative is to train 42,560 participants. Next is Rashtriya Ayurveda Vidyapith. It has hosted the 28th convocation and Shishoyo Paniania Samaskara in New Delhi, right? So it is Rashtriya Ayurveda Vidyapith, correct? It comes under the Ministry of Ayush, correct? And it hosted the 28th edition here. Take a note of this. The event basically aims at enhancing the quality of education and globalizing Ayurveda, right? That means promoting Ayurveda, right? And promoting the quality of education in Ayurveda. This event focused or featured the distinguished Ayurvedic practitioners, accreditations of leading institutions, right? Apart from this, during this event, a FRAV award was presented, that is Fellowship of RAV. RAV is your, just we saw, Rashtriya Ayurveda Vidyapith, correct? So 13 individuals were awarded here with this FRAV award. Next is ISRO's chairman Dr. V. Narayan inaugurated a new research center, and this center is located at IIT Madras, right? So who is the new chairman of ISRO? Dr. V. Narayan, and he inaugurated a new center, a research center, and it was inaugurated at IIT Madras. Here you can see this new center, correct? It has been named after S. Ramakrishnan, the former director of ISRO, and the name of this center of excellence is Ramakrishnan Center of Excellence in Fluid and Thermal Science. Apart from this, along with this new research center, Ekrot Ramachandran Seminar Hall was also inaugurated at IIT Madras by Professor Kamakoti, and here Union Minister Ashwini Vaishnav announced the development of the longest Hyperloop test track at IIT Madras. See, this Hyperloop test is basically, this will be a tunnel type thing where the cars or the equipment or the mobility vehicle will be traveling at a very high speed that will be covering the long distance in a very short time. So, right. So remember, a new research center of excellence at IIT Madras, named after whom? It has been named after Ramakrishnan sir, S. Ramakrishnan, and then a Arcot Ramachandran Seminar Hall was inaugurated, and also a Hyperloop test track at IIT Madras was launched. Next is India AI. This was a mission to promote the artificial intelligence in India. India AI and GSI, that is your Geological Survey of India, they have recently launched an India AI Hackathon 2025 that will revolutionize the mineral targeting with artificial intelligence. In simple terms, the focus of this India AI Hackathon is to leverage artificial intelligence and machine learning so that we can enhance our mineral discovery.
or to be specific, the critical mineral discovery. As we know, these critical minerals are very important for the development of India, right? So with this, the focus will be on identifying the hidden deep mineral bodies using the depth modeling and developing AI and machine learning algorithms for cleaning the data, integration of that data, modeling of that data, and also looking at various locations where we can find these critical minerals using the satellite data. Correct? Take a note of this, students. Very important. If we talk about Geological Survey of India, who is the Director General here? Asit Saha, headquartered in Kolkata, West Bengal, established in 1851. Right, students? Take a note of it. Then, moving on, if we talk hackathon, what is an hackathon? Basically, hackathon is a set of, or basically it is an event where a set of problems are given to various teams, where those teams will be working upon that problem and giving their solutions, and the team that will be providing with the best solutions, that will be rewarded here also, and also a grant will be provided to them so that they can further work upon that particular problem. Moving on, it is Indore, that is in Madhya Pradesh. They have launched the India's first triple P based green waste processing plant. What is this triple P? It is public private partnership, right? So Madhya Pradesh, in Indore in Madhya Pradesh, that is the India's cleanest city, for the 7th consecutive time, they have launched India's first green waste processing plant under the Swachh Bharat Mission Urban 2.0, and this was done through a triple P based partnership, that is public private partnership model. This initiative will convert the green waste into valuable products that will promote sustainability and economic growth. Here, this plant is constructed upon a 55,000 square feet area, that is in Indore, Madhya Pradesh, and daily this plant is processing 30 tons of green waste. Right? Take a note of this, students. Next is DOT, Department of Telecommunication, and WhatsApp. They have collaborated to enhance the digital safety in India. I repeat, WhatsApp, we all know this is a company of Meta only. Correct? They together partnered to launch this Scam Se Bacho initiative that will enhance the digital safety in India. This will aim to educate citizens on identifying and reporting the fraudulent communications, thereby combating the digital scams and misuse of telecom resources. Next is Indian Railway has joined the mission Amrit Sarovar to address the water scarcity. See, we know that water is very important for us, right, humans. We need water for daily usage, for consumption, for drinking water, for bathing, for many other uses, right? So water security should be very important rule, right? We should conserve water, we should use water efficiently, correct? So Indian Railways, they have initiated, or they have recently joined the mission Amrit Sarovar that will be addressing the critical issue of water scarcity across India. Here, with this collaboration, Indian Railway will assist in desilting, excavating, or constructing new Amrit Sarovars, that are the ponds near the railway lines. Right? And significant number of ponds are to be rejuvenated or constructed by 15th of August 2025. As of October 2024, over 68,000 ponds have been completed, enhancing the surface and groundwater availability across various regions. Next is IAEA, that is your International Atomic Energy Agency, right? Their Director General Rafael Marino has inaugurated the SN Bose building at GCNEP, that is your Global Center for Nuclear Energy Partnership. This is a research and development unit in Haryana under the Department of Atomic Energy. He has also launched a certificate course in nuclear energy, which was held by Sushma Swaraj Bhavan in New Delhi. Correct? Take a note of this. And this SN Bose, this building, that is SN Bose building, that has been launched at the Global Center for Nuclear Energy Partnership, right? It has been named after the renowned Indian physicist Dr. Satyendra Nath Bose, who served as an advisor for research and training in the nuclear science and technology. Moving on, students, to international affairs. WMO, that is your World Meteorological Organization, they have released a report. It is talking about the atmospheric carbon dioxide levels reached at 420 particles per million in 2023. That is the highest in the 8 lakh years. In the recent 8 lakh years, this is the highest amount of carbon dioxide levels that we have reached in the atmosphere, that is 420 parts per million. Correct? As per the WMO, 420 parts per million of carbon dioxide is equivalent to 3,276 gigatons
of carbon dioxide into the atmosphere. In 2023, the levels were 2.3 parts per million higher than in 2023, correct, and it is 151% higher than that of pre-industrial level that used to be in 1750s. And the rise in this carbon dioxide levels in the atmosphere is increasing the climate change, the global warming, which in turn is increasing the temperature of the earth. If we talk about World Meteorological Organization, where is the headquarter? It is in Geneva, Switzerland. There are 193 members here, and Secretary General here is Celeste Solo. Moving on, students, next is banking and finance. RBI and Bank of Mauritius, they have signed an MOU to promote Indian rupees and MUR for bilateral transactions. So this MOU has been signed to promote Indian rupees and Mauritian rupee for cross-border transactions. Right? Take a note of this. Next is Paytm. They have partnered with SBI Mutual Fund to launch Jan Nivesh 250 SIP. That is your systematic investment plan, right? That means you will be able to invest 250 rupees in the SIP, for which Paytm, they have partnered with SBI Mutual Fund, that is a subsidiary of SBI, and they have launched this Jan Nivesh. Even the small investment will be mattering here, right? And this scheme was launched by SEBI chairperson Madhabi Puripak, right, on 17th of Feb, right? So this is an earlier news. Also, this scheme allows the individuals to start investing with as little as 250 rupees, offering daily, weekly or monthly SIP options to suit the investors. Next is also Paytm Money. This is a subsidiary of Paytm only. They have recently received the SEBI's approval as a research analyst, and this is important news, students. Now the Paytm Money, they have been granted the approval as a research analyst by SEBI, correct? And this registration will enable the Paytm Money to provide SEBI compliant research services, including the investment insights, research reports and data driven analysis. Also, these services will enhance the user experience and provide the expert backed insights to both retail and institutional investors. Next is economy and business. Fitch Ratings kept India's GDP unchanged at 6.5% in FY26 and increased the GDP forecast for FY27 to 6.3%. So remember, for FY26 it is 6.5% projection, and for FY27 it is 6.3% projection. Apart from this, if we talk about the inflation in the month of January 2025, the inflation was 4.3%. Then in Feb 2025, the inflation was 3.6%. That means we can say that inflation is coming down, and it is expected the inflation will be at 4.3% by December 2026. Right? Very important, students. Next is Indian literary theorist Gayatri Chakrabarti Sipwak to receive the 2025 Hallberg Prize. 2025 Hallberg Prize. First of all, this Hallberg Prize, why is this given? This is given annually by the Norwegian government to the scholars who have made exceptional contribution in the fields of arts, humanities, social science, law and theology. This award was established in the year 2003 to honor the Danish Norwegian writer Ludvig Holberg, often regarded as the equivalent. This award, this Hallberg Prize, is often regarded as the equivalent of the Nobel Prize in these disciplines. So Indian literary theorist Gayatri Chakrabarti Spivak, she will be receiving this 2025 Hallberg Prize, correct? And this award recognizes her groundbreaking work in the post-colonial studies, feminist theory and literary criticism. Next is appointments and resignation. Former cricketer Krishna Machari Shrikant appointed as the Goodwill Ambassador for the Vision 2020 India. I repeat, recently Krishna Machari Shrikant, the former captain of Indian national cricket team, as you can see him in the center here, right, has been appointed as the Goodwill Ambassador for the Vision 2020 India, a national initiative focused on eliminating the avoidable blindness and visual impairment across India. Take a note of this, students, very important. This Vision 2020, basically this is the Right to Sight India. This is a national-wide initiative that is aimed at eliminating the avoidable blindness and visual impairment across India. With this, 5 billion blind individuals and 80% of the cases are being avoidable will be tackled under this initiative. Also, Indian cricketer Rishabh Pant has been appointed as the brand ambassador for Go Ibibo.
right? This GoIBIBO, this is a online travel platform. Next students, next is acquisitions and mergers. Bajaj Finserv to acquire Alliance SC's 26% stake in the insurance joint venture for 24,180 crore rupees, right? Take a note of this directly. Next students, we are talking about science and technology, and when in interesting and historic feat has been achieved by humans. Now Sunita Williams and Butch Wilmore, who were stranded at the International Space Station for very long, are now returned has now returned back to Earth in 9 months. The mission that brought them back, it is Crew 9. It was the Dragon capsule of SpaceX that was used to bring them back, right? And here on the right is Butch Wilmore, on the left is your Sunita Williams, correct? The 4 members group was launched to the crew using this Crew 9 mission. In this, 4 astronauts went to the International Space Station. 2 stayed there, 2 came back along with Sunita Williams and Butch Wilmore, correct? If we talk about here Sunita Williams, she's a NASA astronaut, retired US Navy captain, selected by NASA in 1988. She completed 3 space missions, that is Expedition 14, 15, 32, 33, 71, 72, and accumulating a total of 608 days in space. Also, she set the record for the female spacewalk, totaling 29 hours and 17 minutes. Next is books and authors. Students, Justice P.N. Prakash has launched a book, Memories and Milestones, to celebrate the 60 years of Blue Cross of India. Very important students, directly take a note of this. Name of the book is Memories and Milestones. This is to celebrate the 60 years of Blue Cross of India. This book was launched by Justice P.N. Prakash, correct? This book authored by historian V. Sriram and Lashman, and it documents the 60 years of journey of the Blue Cross of India, correct? So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning. Rajesh Nirvan was appointed as the Director General of where he was appointed as the Director General of Bureau of Civil Aviation Security as approved by the ACC, succeeding Amrit Mohan Prasad. Next, who has been recently appointed as the acting Chief Executive Officer of Hero Motocorp Limited effective from 1st of May. So Vikram Kasbekar was appointed as the acting Chief Executive Officer of Hero Motocorp. He will be succeeding whom? He will be succeeding Niranjan Gupta. Next, the first Flemish nationalist Bart Alberta de Wever was elected as the Prime Minister of Belgium. And he will be succeeding Alexander de Croo. Next, who was recently appointed as the Chief Executive Officer of Citibank India, succeeding Ashu Khullar. So K. Balasubramaniam was appointed as the CEO of Citibank India, succeeding Ashu Khullar. Next, who was appointed as the Romania's interim president following resignation of Klaus Iohannis. So Ili Bolojan was appointed as the Romania's interim president. Next, which country elected Jotham Napat as the 5th Prime Minister? It is Vanuatu, right? Has appointed Jotham Napat as their 5th Prime Minister. Next, which country elected Konstantinos Tassoulos as the President for 5 years with effect starting from 13th of March 2025? Will be succeeding Katerina Sakelloropoulou. So it is Greece that has appointed Konstantinos Tassoulos as their president for 5 years. Next, who has been elected as the 73rd president of ICAI, that is Indian Chartered Accountants of India, for the term 25-26, succeeding Ranjit Kumar Agrawal. So Charanjot Singh Nanda has been appointed here as the 73rd president of ICAI. Next, president's rule was imposed in the Indian state, that is Manipur, right? And this was following the resignation of the Chief Minister N. Biren Singh. Next, in Feb, RBI approved the appointment of Prabdev Singh as the CEO of Standard Chartered of India, right, with effect from 1st of April 2025, and he will be succeeding whom? Zareen Daruwala. Next, who was appointed as the 26th Chief Election Commissioner of India, succeeding Rajiv Kumar, and set to assume the charge on 19th of Feb. So Ganesh Kumar was appointed as the 26th Chief Election Commissioner of India.
Next, who took charge as the Delhi's 9th Chief Minister and 4th Women Chief Minister on 20th of Feb? So, Rekha Gupta of BJP, right, has been appointed as the Chief Minister of Delhi, 9th Chief Minister of Delhi and 4th Women Chief Minister of Delhi. Next, which of the following has been appointed or which of the following has appointed Salila Pandey as their new Managing Director and Chief Executive Officer with effect from 1st of April for a period of 2 years. So it is SBI Cards and Payment Service Limited that has appointed Salila Pandey as their new MD and CEO with effect from 1st of April, and that too for 2 years. Next, in Feb, the Government of India extended the tenure of Chief Economic Advisor Venkataraman Anantha Nageshwaran until which date? So it has been extended till 31st of March 2027. Next, until which date has the Government of India extended the tenure of B.V.R. Subramaniam as the Chief Executive Officer of Niti Aayog in Feb 2025? It is Feb 24, 2026 till, right? Next, who was appointed as the new Chief Secretary of Haryana in Feb 2024-5 replacing Vivek Joshi? So Anurag Rastogi has been appointed as the new Chief Secretary of Haryana. Next, the Appointment Committee of the Cabinet recently extended the tenure of Dr. Rajiv Singh Raghuvanshi as the Drug Controller General of India in the Central Drug Standard Control Organization on a contract basis with effect from 1st of March 2025. Next, who has been recently appointed as the new Chief Executive Officer of Unilever PLC effective from 1st of March replacing Hein Schumacher? So Fernando Fernandez has been recently appointed as the new Chief Executive Officer of Unilever PLC. Next, who was appointed as the Chairman of Ratan Tata Endowment Foundation on 25th of Feb 2025? So N. Chandrasekharan was appointed as the Chairman of Ratan Tata Endowment Foundation on 25th of Feb 2025. Let's move to the homework section, students. First is, which bank has launched Project Hawk? Right, and this is to support whom? Second question, recently who has launched Ensuring Heroes? Which organization launched this and when was this launched? Third question, recently which is the bank that have launched that became the first bank to launch the first saving account for the women NRIs? Name that account also and that bank. Fourth question, recently RBI will be issuing which currency new notes with the new governor's signature? Who is the new governor of RBI? Correct. Then tell me which note is having the RBI governor sign and 1 rupee note is having some other person signs. Who is that? Fifth question, recently an application was launched for Prime Minister Internship Scheme. This is scheme what? When was this launched? And under this has been launched for whom? How much stipend will be given under this scheme? And this scheme was launched by whom recently? The application, a mobile application for this scheme has been launched. Who launched it? Right? So these are your homework questions, students. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 20 मार्च के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स के बारे में एंड इंपोर्ट्स के बारे में। देन विज्ञान धारा स्कीम को डिस्कस करेंगे जो कि साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करने का काम करेगा। देन सांसद भाषिनी यह भी लॉन्च किया गया जो कि एक AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल पार्लियामेंट्री ऑपरेशंस के लिए लिया गया है। देन हम बात करेंगे राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ की जिसका 28 कॉन्वोकेशन था। NEC के अवार्ड्स भी यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। इसी के अलावा स्टूडेंट्स मैनी मोर न्यूज़ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किया जाता है जिससे आपकी लर्निंग में एनहेंसमेंट हो सके एंड आपको नई चीज़ें डेली पता रहे एंड आपकी लर्निंग में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई कमी ना आ सके आपको। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हमारे साथ तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ एंड लेट देम know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana.
We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टूडेंट्स, नेशनल अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़, अभी $1 ₹87 के आसपास चल रहा है, जो कि पहले कभी ₹80 होता था. अब इसका डिफरेंस क्या हुआ है हमारे एक्सपोर्ट में. अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पहले जब डॉलर में हम आता था पैसा, $1 पहले ₹80 देता था, मैं अब 87 दे रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. लेकिन वहीं पे अगर हम इंपोर्ट की बात करें, नेगेटिव चीज़ क्यों हो जाती है कि अगर हम इंपोर्ट करते थे पहले $1 ₹80 से $1 खरीद के हम कुछ सामान ले सकते थे, वहीं पे अब हमें ₹87 देने पड़ रहे हैं $1 के लिए उस सेम सामान को लेने के लिए. करेक्ट. तो अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत नेगेटिव चीज़ है. एंड हम जानते हैं इंडिया एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है. अभी डाटा रिलीज सामने आया कि इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 6.24% से बढ़ गया है. अब हम $750.53 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन अप्रैल से लेके फेब मंथ ऑफ FY25. ये डाटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है. वहीं पे अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया का जो मर्चेंडाइज एंड सर्विस इंपोर्ट है वो $839.89 बिलियन का हमें देखने को मिला है. एंड नेट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट $89 बिलियन के आसपास का हमें नेगेटिव देखने को मिलता है. मतलब इतना हमारा इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे मतलब हमें ज़्यादा डॉलर शेड करने पड़ रहे हैं, जिससे हमें ज़्यादा रुपीज़ दे के डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं. राइट. जिससे पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है. तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नेगेटिव चीज़ है. बट आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, लेकिन इम्पोर्ट और ज़्यादा चीज़ी से 7.28% से बढ़ा हुआ दिखा है. करेक्ट. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है विज्ञान धारा स्कीम. इसकी बात करें तो ये इंडिया की साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को अभी लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. इससे बेसिकली क्या है कि हम कैसे इनोवेशन के ऊपर काम कर सकें, कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें. एंड इनका इस ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज को बना सकें, बेसिक ट्रांजैक्शनल एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च को प्रमोट कर सकें, इनोवेशन ला सकें स्कूल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, स्टार्टअप्स में, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम कर सकें इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड. जब भी आप देखते हैं कि स्टेम इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जाता है अमंग द गर्ल्स. ठीक है. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स. लोकसभा सेक्रेटरीट एंड MEITY इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया सांसद भाषिनी को लॉन्च करने के लिए, जो कि एक AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल पार्लियामेंट्री ऑपरेशंस के लिए रहेगा. देखो पार्लियामेंट में आप जानते हैं पहले तो आप ये जानते हैं कि इंडिया एक मल्टीलिंगुअल नेशन है. राइट. बहुत 22 तो हमारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं. राइट. इसी के अलावा आप देखते हैं कि बड़ी सारी अलग अलग इंटेलेक्ट है. तो इतनी लैंग्वेजेस से जब पार्लियामेंट में जो लोग आएंगे अपने अपनी लोकेशन को, अपने अपनी जगह को, अपने अपने लोगों को, अपने अपने कल्चर को वो जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कई बार चीज़ें समझने में डिफिकल्ट हो जाता है. राइट. कम्युनिकेशन बिकम्स डिफिकल्ट. तो ऐसे जगह पर राइट कम्युनिकेशन कोई बैरियर ना हो सके, सब एक दूसरे की लैंग्वेज को ईजिली समझ सके, इसीलिए ये भाषिनी, सांसद भाषिनी को लॉन्च किया गया है. भाषिनी क्या है बेसिकली? भाषिनी है आपका भाषिनी की फुल फॉर्म याद रखेंगे, जो कि है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया. राइट. ये एक AI प्लेटफॉर्म है जो कि आपका मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करता है, कि ताकि लैंग्वेज बैरियर कभी ना आ सके. राइट. और इसी के लिए MOU हमने देखा लोकसभा सेक्रेटरीट एंड MEITY के द्वारा ये MOU यहाँ पे साइन किया गया है. इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे MEITY एंड DFI जो कि है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा मिलके NIDAR लॉन्च किया गया, जो कि है नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च. अगर आपको याद हो कुछ टाइम सरकार के द्वारा
जो ड्रोन है ना उनका इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था, आप सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए ही ड्रोन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इन्हीं के द्वारा भी ये NIDR भी लॉन्च किया गया ताकि ड्रोन्स के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस किया जा सके एंड इनके बेटर यूज केसेस देख सके। इवन आप देखेंगे बहुत सारी कंपनी ऐसी आ गई हैं मार्केट में जो कि ड्रोन्स के ऊपर काम कर रही हैं एंड इनके बहुत सारे यूज केसेस आने लगे हैं, करेक्ट। एंड इसको स्वायन कैपेसिटी बिल्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड अनमैन्ड एरियल सिस्टम के अंडर लॉन्च किया गया था। देखो ये स्वायन क्या है, बेसिकली जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था ताकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, इनोवेशन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके, किसमें, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स पर, करेक्ट। एंड 42,560 पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन करने का यहाँ टारगेट रखा गया था इसके अंडर। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ, इन्होंने होस्ट किया 28वां कॉन्वोकेशन एंड शिष्यो पनायानिया समस्कारा, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में ही हमें देखने को मिला था। ये बेसिकली याद रखेंगे इसका एम क्या था कि हम कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं इन द आयुर्वेदा सेक्टर, राइट। इन आयुर्वेदा सेक्टर हम कैसे एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों को स्किल्स इम्पार्ट करा सकते हैं, कैसे इसकी एजुकेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, करेक्ट। एंड इस इवेंट को बेसिकली काफ़ी सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स एंड लीडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कवर किया गया था, उनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। एंड इसी के दौरान FRAV अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। FRAV क्या है, फेलो ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ अवार्ड्स, 13 इंडिविजुअल्स को यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इसरो के चेयरमैन डॉक्टर V नारायण, इन्होंने इनॉग्रेट किया न्यू रिसर्च सेंटर, कहाँ पर, IIT मद्रास में। ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहेगा जहाँ पे आपका एक फ्लूइड एंड थर्मल साइंस के ऊपर काम किया जाएगा, फ्लूइड एंड थर्मल साइंस के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, यूज केसेस फाउंड आउट किया जाएगा, राइट, एट IIT मद्रास। पहली चीज़ तो याद रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, एरकॉट रामाचंद्रन सेमिनार हॉल को भी लॉन्च किया गया है IIT मद्रास में। तीसरी चीज़ याद रखेंगे, अश्विनी वैष्णव, राइट, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है, इनके द्वारा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई एट IIT मद्रास। ये हाइपर लूप क्या है, बेसिकली यहाँ से व्हीकल काफ़ी हाई स्पीड से जाएगी एंड दूसरी पॉइंट से एग्जिट करेगी एंड ये काफ़ी बड़ा डिस्टेंस ईजिली यहाँ पे कवर कर पाएगी एज ये व्हीकल बहुत ही हाई स्पीड से चलने वाली है। अगर आपको याद हो एलॉन मस्क की एक कंपनी थी, बोरिंग कंपनी, उनके द्वारा ये हाइपर लूप का कंसेप्ट प्रपोज किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया। ये एक इंडिया का इनिशिएटिव है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने के लिए एंड इंडिया में AI को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ अभी पार्टनर किया ताकि इंडिया AI हैकाथॉन को लॉन्च किया जा सके ताकि क्रिटिकल मिनरल्स की टारगेटिंग की जा सके विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो AI एंड मशीन लर्निंग की मदद से जो इतना सारा डाटा हमने अभी तक गैदर किया है सैटेलाइट की मदद से हमारे इंडिया का, लैंड का, अंडरग्राउंड का, राइट, तो उसको यहाँ पे एनालाइज करके उसका प्रॉपर मीनिंगफुल डाटा निकाल के उसका एनालिसिस करके कि किस एरियाज में हमें क्रिटिकल मिनरल्स देखने को मिल सकते हैं, कहाँ पे हमें उनकी माइनिंग करनी चाहिए, कहाँ पर हम उनको ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का डाटा यहाँ पे लाने का उसको सामने लाने का ये काम किया जाएगा, राइट। और इसी के लिए इंडिया AI एंड GSI के द्वारा यहाँ पे पार्टनरशिप करी गई एंड यहीं पे आप देखेंगे हैकाथॉन लॉन्च किया गया था। इसका हैकाथॉन क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी एंड इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर कई सारी टीम्स होंगी जो कि वर्क करेंगी, सॉल्यूशंस निकालेंगे एंड उनमें से जो बेस्ट टीम होगी उनको सेलेक्ट किया जाएगा, उस बेस्ट सॉल्यूशन को सेलेक्ट किया जाएगा एंड फर्दर उनको ग्रांट प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि उसके ऊपर वो काम कर सके। अगर GSI की मैं बात करूँ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे, असित साहा, हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल एंड 1851 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है एंड इंदौर 7 बार लगातार यहाँ पे क्लीनेस्ट सिटी इंडिया के सामने बन के आया है, राइट। तो इंदौर के द्वारा भी इंडिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये प्लांट बेसिकली आपका जो ग्रीन वेस्ट है उनको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा एंड सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करेगा। यहाँ पे गार्बेज फ्री सिटीज अर्बन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। 55,000 स्क्वायर फीट का यही आपका प्लांट रहेगा जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश किया जाएगा। 30 टन ऑफ ग्रीन वेस्ट को यहाँ पे डेली रिसाइकल किया जाएगा, करेक्ट। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश कहाँ पर है, इंदौर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड व्हाट्सएप के द्वारा यहाँ पे कोलैबोरेट किया गया है ताकि डिजिटल सेफ्टी के ऊपर काम किया जा सके। देखो हम जानते हैं इंडिया में स्कैम कॉल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इसीलिए लोगों को स्कैम से बचाया जा सके ये एक इनिशिएटिव कैंपेन लॉन्च किया, स्कैम से बचाओ, DOT एंड व्हाट्सएप के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया ताकि डिजिटल सेफ्टी के ऊपर इंडिया में काम किया जा सके एंड लोगों को अवेयर किया जा सके ताकि
कोई भी उन तक इशू ना आ सके, एंड वो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर वो लोग वहाँ पे पहले ही उसको क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि बाकी के लोग यहाँ पे संभल जाएं। एंड जब रिपोर्ट करेंगे तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे व्हाट्सएप हो गया, उनको पहले ही उस फ्रॉड कॉलर को, उस नंबर को पहले ही ब्लॉक कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, इंडियन रेलवेज, इन्होंने ज्वाइन किया मिशन अमृत सरोवर को टू एड्रेस द वाटर सिक्योरिटी, वाटर स्कैसिटी। देखो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसका प्रॉपर सस्टेनेबल तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। करेक्ट, वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर वाटर ड्रिंकिंग के लिए मिलता भी नहीं है, राइट। हमें मिला है तो हम उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए। इसीलिए एक मिशन अमृत सरोवर लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था कि पॉन्ड्स बनाते हैं, एंड पॉन्ड्स में जब पानी जाएगा तो इससे क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर अच्छे से रिचार्ज होगा, राइट। तो इस अमृत सरोवर का एम क्या था कि हम पॉन्ड्स बनाएंगे, करेक्ट। एंड अब इंडियन रेलवेज ने यहाँ पे इनको ज्वाइन कर लिया है। ये क्या कह रहे हैं इस पार्टनरशिप के अंडर कि हम रेलवे स्टेशन के पास में पॉन्ड्स बनाएंगे, ताकि आसपास के एरिया में जो वाटर है वो रेजुविनेट हो सके एंड ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ सके, करेक्ट। यहीं पर टारगेट रखा गया है कि हम 2025-15 अगस्त तक काफ़ी सारे पॉन्ड्स यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। एंड अगर हम देखें अक्टूबर 2024 तक तो कुछ 68,000 से भी ज़्यादा पॉन्ड्स यहाँ पे बनाए जा चुके हैं अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मारिनो, इन्होंने इनॉग्रेट किया SN बोस बिल्डिंग को एट GCN NEP। देखो सबसे पहली चीज़ IAEA क्या है, ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये वियना ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है, एंड इनके डायरेक्टर जनरल राफेल मारिनो, इनके द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया SN बोस बिल्डिंग को, जो कि ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप पर रहेगा, जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है हरियाणा में अंडर DAE, करेक्ट। इन्हीं के द्वारा यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी प्रोवाइड कराए जाएंगे न्यूक्लियर एनर्जी में, ताकि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके एंड उनको ट्रेन किया जा सके इस फील्ड में। अगर हम बात करें डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस, ये एक इंडियन फिजिसिस्ट थे, करेक्ट, एंड ये काफ़ी रिनोन्ड साइंटिस्ट हैं, एंड यहीं पर इन्हीं के नाम के यहाँ पे इनको इसका यहाँ पे नाम रखा गया इस बिल्डिंग का। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो बताती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है ना वो 420 पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गया 2023 में, जो कि हाईएस्ट एवर है पिछले 8 लाख सालों में। ये 101% इंक्रीज है। अगर हम 1750 की बात करें, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उससे पहले की, उसके और आज के कंपैरिजन में 151% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है, जो कि बहुत खराब है। इतना पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहता है एनवायरनमेंट के लिए, करेक्ट। एंड अगर हम ये डाटा देखें 420 पार्ट्स पर मिलियन, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ 3276 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होगी, ये ग्रीन हाउस गैस है, ये हीट को ट्रैप करेगी, ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर रेज करेगी, तो क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा फर्दर एक्सेलरेट होता हुआ हमें दिखेगा, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। अभी RBI एंड बैंक ऑफ मॉरिशस ने एक MOU साइन किया, ताकि इंडियन रुपीस इंडिया का एंड मॉरिशियन रुपी मॉरिशस का, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है वो हो सके, एंड दोनों कंट्रीज एक दूसरे की करेंसी को यूज़ कर सके फॉर ट्रेड पर्पसेस। नेक्स्ट आ जाते हैं पेटीएम। दो चीज़ पेटीएम की याद रखेंगे, पहली है SBI म्यूचुअल फंड के साथ इन्होंने पार्टनर किया था जन निवेश के लिए 2050 की SIP यहाँ पे लाई जा सके। जनवरी में लाई गई थी ये स्कीम, जिसके अंदर आप 250 रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड तब मदाबी पूरी बक फरवरी में लाई गई थी, एंड तब मदाबी पूरी बक जो कि चेयरपर्सन थी सेबी की, उनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कि आप डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे इस SIP को लॉन्च कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू 250 रुपये आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब छोटे सेगमेंट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर पेटीएम की बात करें तो पेटीएम मनी एक सब्सिडरी है 197 कम्युनिकेशन की, करेक्ट। इनके द्वारा अभी सेबी का अप्रूवल मिला एज ए रिसर्च एनालिस्ट। मतलब अब रिसर्च एनालिस्ट का टाइटल मिलने से क्या होगा पेटीएम मनी को, इससे क्या होगा कि अब रिसर्च एनालिस्ट के टाइटल से क्या होगा कि जो सेबी कंप्लाइंट रिसर्च सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स दे सकते हैं, ये रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश कर सकते हैं, एंड डाटा ड्रिवन एनालिसिस ये कर सकते हैं कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है। इससे क्या होगा, जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेटर होता हुआ दिखेगा, एंड बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इनकी रिपोर्ट से। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर स्टूडेंट्स। फिच रेटिंग्स के द्वारा इंडिया का जो GDP ग्रोथ रेट है FY26 के लिए 6.5% रखा गया, वहीं पे FY27 के लिए 6.3% इनका डाटा रखा गया है। यहीं पे अगर हम देखें तो जो इन्फ्लेशन का डाटा है, अभी
जनवरी के महीने में एंड फेब के महीने में देखें तो फेब के महीने में कहीं ना कहीं जो था 3.6% था, जैन के महीने में 4.3% था। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कम होता हुआ दिखा है। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें दिसंबर 2025 तक ये 4% बोला गया है एंड दिसंबर 2026 तक 4.3% का इन्फ्लेशन यहाँ पे टारगेट में रखा गया है। फिच की बात करें, फिच रेटिंग्स न्यूयॉर्क यूएसए बेस्ड कंपनी है, प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, इयन लाइनल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे। हम बात करेंगे अभी रिसेंटली एक अवार्ड की जो कि है हॉलबर्ग प्राइज। ये हॉलबर्ग प्राइज बेसिकली दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, साइंस, सोशोलॉजी, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, लॉ, थियोलॉजी, करेक्ट। एंड होलबर्ग प्राइज एक इंटरनेशनल अवार्ड है, नॉर्वेनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। 2003 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है, करेक्ट। लुडविग हॉलबर्ग, करेक्ट, ये एक डैनिश नॉर्वेनियन राइटर थे, उनकी रिमेम्बरेंस में ये अवार्ड दिया जाता है, करेक्ट। एंड ये नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट होता है इन फील्ड्स में। तो अभी इंडियन लिटरेरी थियोरिस्ट गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, इनको रिसीव हुआ 2025 का हॉलबर्ग प्राइस। टेक अ नोट ऑफ दिस। 4.6 करोड़ रुपीस का भी ग्रांट इनको यहाँ पे दिया गया, मतलब 540,000 यूएस डॉलर भी इनको यहाँ पे एज अ प्राइज मनी मिला। इनको 2013 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है स्टूडेंट्स, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। फॉर्मर क्रिकेटर कृष्णामाचारी श्रीनाथ, इनको अपॉइंट किया गया गुडविल एम्बेसडर फॉर विजन 2020 इंडिया के लिए। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये फॉर्मर कैप्टन है इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के एंड विजन 2020 इंडिया के ये यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। इस इनिशिएटिव के अंडर जो भी इंडिविजुअल्स को आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्लाइंडनेस है, राइट, उनको यहाँ पे कैटर करने के लिए, उनको हेल्थ में जो भी ब्लाइंड इंडिविजुअल्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियली या फिर उनको कोई भी मदद है मेडिकल वाइज वो प्रोवाइड कराने के लिए ये इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। इसी के अलावा याद रखेंगे ऋषभ पंत, राइट, ऋषभ पंत को भी अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है गो आईबीबो का, राइट। ये गो आईबीबो क्या है, ये एक ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है एंड इनके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं ऋषभ पंत। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पे। बजाज फिनसर्व ये एक्वायर करेंगे अलायंस एससी का 26% स्टेक इन इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर्स फॉर 24,180 करोड़ की लागत से, ठीक है, 26% एक्वायर करेंगे ये। नेक्स्ट साइंस एंड टेक पर आ जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग न्यूज स्टूडेंट्स। सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर, ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स अब अर्थ पर वापस आ गए हैं। पहले ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे थे, 9 महीने से फंसे हुए थे। एंड ड्रैगन कैप्सूल ऑफ स्पेसएक्स, उसकी मदद से इनको वापस लाया गया है। स्पेसएक्स इलॉन मस्क की कंपनी है, राइट। ये यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे, काफ़ी टाइम से प्लांट्स को ग्रो कर रहे थे, करेक्ट। एंड अब वापस ये स्पेस में यहाँ पर आए हैं। जो मिशन इनको लेके आया वापस वो है क्रू 9। क्रू 9 में 4 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, 2 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रुक गए एंड 2 इनके साथ मिलकर अभी ये वापस लैंड करे हैं। सो टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर हम इनकी बात करें सुनीता विलियम्स की, ये एक नासा एस्ट्रोनॉट है। पहले ये रिटायर्ड यूएस नेवी कैप्टन थी, 1998 में नासा में सेलेक्ट की गई थी, करेक्ट। एंड इन्होंने लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड बनाया फॉर फीमेल स्पेस वॉक, जो कि है 29 आवर एंड 17 मिनट्स का। ये भी याद रखेंगे, अभी रिसेंट भी हमने ये डिस्कस किया था, करेक्ट। चलिए बुक्स एंड ऑथर्स पे आते हैं स्टूडेंट्स। जस्टिस पीएन प्रकाश, इन्होंने लॉन्च करी बुक मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स टू सेलिब्रेट 60 ईयर्स ऑफ ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया। तो जस्टिस पीएन प्रकाश जो फॉर्मर जज है मद्रास हाई कोर्ट के, उनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया। इस बुक को ऑथर किया गया है वी श्रीराम एंड लक्ष्मण के द्वारा। एंड ये 60 साल की जो जर्नी है ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया की, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है इस बुक में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया एज द एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई 2025, वो है विक्रम कासबेकर। ये सक्सीड करेंगे निरंजन गुप्ता को। नेक्स्ट, फर्स्ट फ्लेमिश नेशनलिस्ट बार्ट एल्बर्टा दे वीनर वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर, कहाँ की, बेल्जियम की। नेक्स्ट है हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ सिटी बैंक इंडिया, आशु खुल्लर को ये सक्सीड करेंगे। तो के बाला सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ सिटी बैंक इंडिया एंड आशु खुल्लर को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द रोमेनियाज इंटर्म प्रेसिडेंट फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ क्लॉस इहाउनेस 12 फरवरी से, तो कौन है, वो है इली ब्लोजॉन। नेक्स्ट है किस कंट्री ने इलेक्ट किया जोनाथन नापात को एज द 5th प्राइम मिनिस्टर इन Feb 2025, वो है वनुआतू। नेक्स्ट, किस कंट्री ने इलेक्ट किया कॉन्स्टेंटोनियस तासुलोस को एज द प्रेसिडेंट 5 साल के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 13 मार्च 2025 एंड ये कैटरीना को सक्सीड करेंगे। तो कहाँ के, ग्रीस के।
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 73rd प्रेसिडेंट ऑफ ICAI 25-26 टर्म के लिए रंजीत कुमार अग्रवाल को ये सक्सीड करेंगे, ये है चरणजोत सिंह नंदा एंड 73rd प्रेसिडेंट बने, ये नंबर भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, इन फैब प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया गया था किस इंडियन स्टेट पे? मणिपुर में। कब? जब यहाँ वहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने रेजिग्नेशन दे दिया था। नेक्स्ट, इन फैब RBI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ प्रदेव सिंह एज द CEO ऑफ कहाँ के CEO अपॉइंट किए गए? स्टैंडर्ड चार्टर्ड ऑफ इंडिया के ये अपॉइंट किए गए हैं एज द CEO। 1 अप्रैल 2025 से सक्सीड करेंगे एंड जरीन दारूवाला को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सक्सीडिंग राजीव कुमार एंड सेट टू अज्यूम चार्ज ऑन 19th of Feb 2025। तो किनको अपॉइंट किया गया है 26वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो वो है गणेश कुमार को। नेक्स्ट, हु टुक चार्ज एज द दिल्लीज 9th चीफ मिनिस्टर एंड 4th वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑन 20 Feb सक्सीडिंग आतिशी मालेना सिंह? तो रेखा गुप्ता जी ये अपॉइंट की गई हैं 9वीं चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड 4th वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। बीजेपी से ये बिलोंग करती हैं। एंड प्रवेश सिंह वर्मा ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड सलीला पांडे एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years? सो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया सलीला पांडे जी को एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड। ये सक्सीड करेंगे अभिजीत चक्रवर्ती को। नेक्स्ट, इन फैब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया टेन्योर ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वेंकटरमन अनंथा नागेश्वरन अंटिल विच डेट? तो इनका टर्म 31 मार्च 2027 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, अंटिल विच डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ BVR सुब्रमण्यम एज द CEO ऑफ नीति आयोग? तो इनका टर्म 24 फरवरी 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा रिप्लेसिंग विवेक जोशी? तो अनुराग रस्तोगी यहाँ पे नए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं हरियाणा के, ये विवेक जोशी को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट है ACC अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी एज द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इफेक्टिव फ्रॉम 1st of March 2025। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिलीवर PLC? करेक्ट, इफेक्टिव फ्रॉम 1st of March एंड हेन शुमाकर को ये रिप्लेस करेंगे, तो वो है फर्नांडो फर्नांडिस। लेट्स मूव टू द होमवर्क सेक्शन स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज विच बैंक हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हॉक, right? And this is to support whom? Second question, recently who has launched Ensuring Heroes? Which organization launched this and when was this launched? Third question, recently which is the bank that have launched that became the first bank to launch the first saving account for the women NRIs? Name that account also and that bank. Fourth question, recently RBI will be issuing which currency new notes with the new governor's signature? Who is the new governor of RBI? Correct. Then tell me which note is having the RBI governor sign and 1 rupee note is having some other person signs. Who is that? Fifth question, recently an application was launched for Prime Minister Internship Scheme. This is scheme what? When was this launched and under this has been launched for whom? How much stipend will be given under this scheme? And this scheme was launched by whom recently? The application, a mobile application for this scheme has been launched. Who launched it? Right? So these are your homework questions, students.